coming up from the Northeast Live studios in Guwahati. Northeast Tonight with Wasbir Hussain. Hello and welcome to Northeast Tonight, the show that decodes the region. Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang is currently touring the northeastern states. He was in Arunachal Pradesh, then he attended the Bodo Sahitya Sabha session in Western Assam, which was graced by President Ramnath Kovind on Wednesday, and today he is visiting Meghalaya. Talking to your channel Northeast Live early this morning, Chief Minister Prem Singh Tamang said his tour of the region was to promote unity among the 8 northeastern states and work together in sync with Prime Minister Narendra Modi's attempt to unite the region and usher in rapid progress and development in the 8 states. But back home in Sikkim, the 2 main political parties, the ruling Sikkim Krantikari Morcha and the opposition Sikkim Democratic Front, are engaged in bitter political slugfests, leading to even street fights among rival supporters. Recently, at Sorang, there was violence between supporters of the 2 parties. There has also been a serious allegation that an SDF leader had opened fire from a weapon he was carrying during the incident. An investigation is on, and the SDF leader, according to the police, is absconding. The people in the Himalayan state want a peaceful atmosphere to prevail so that Sikkim can prosper and turn into a real tourist paradise, the mainstay of the picturesque state. The ruling SKM has accused former Chief Minister Pawan Chamling's SDF of disrupting peace and creating an atmosphere of fear. To discuss the prevailing situation and the road to peace in Sikkim, I am joined from Gangtok by Mr. Jacob Kaling, SKM leader and political secretary to Chief Minister Prem Singh Tamang. Also from Gangtok, I am joined by SDF spokesman JB Darnal. Joining me as well is Mr. Pasang G. Sherpa, spokesperson of Sikkim Nagarik Samaj. And I also have with me well-known advocate Mr. Naveen Kiran. Early this morning, Chief Minister Prem Singh Tamang spoke to our channel Northeast Live in Guwahati about the situation in Sikkim. Before we begin the discussions, let us listen in to what Chief Minister Prem Singh Tamang had to say. जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ जाएंगे, तो एक तो पकड़ा है, 25 साल तक सरकार में रहे हुए जो नेता के नेतृत्व में ऐसा काम हो रहा है, जो अभी वो लोग सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार में नए होने के कारण वो लोग बौखला गए हैं, तो इसीलिए वो लोग अनेकों सिक्किम में अशांति करने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिक्किम एक शांति प्रिय राज्य है। इसलिए हम जो भी कल्प्रिट है, जो भी दोषी है, उनको हम पकड़ लेंगे, पूरा कानूनी कार्रवाई करेंगे। छानबीन हो रहा है। सर, इसके आरोप लगा है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के ही द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कहना है इसको? नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। वो लोग ने आके वहाँ पर एक लड़का था, वो पार्टी का भी नहीं था, हमारा SKM पार्टी का भी नहीं था, उनको आँख में मतलब उसने पाउडर डाल दिया, तो एक केमिकल डाल दिया। उसके बाद में थोड़ा वहाँ पर झगड़ा हुआ। उसके बाद गांव का आदमी आके क्यों ऐसा किया, ये क्यों किया बोलने के बाद वो लोग अपने आप खुद गन निकाल के वो लोग फायर किया। ये तो इलीगल काम है, जो बेकानूनी काम है ना, इसलिए वही करता है ना। जैसे आपको मालूम है, असेंबली विधानसभा सेशन में वो लोग ने बाहर का जो लड़का लोग को लाकर वहाँ पर जो अशांति मचाने का कोशिश किया था, वो भी पकड़ में आ गए। इस बार भी वो अशांति करने के लिए सोरेंग में गए थे, वो भी पकड़ पे आ। इसीलिए उनका जो 25 साल का जो क्रिया है, जो 25 साल में उन्हें किया था सिक्किम में, वही काम अभी भी करने जा रहा है। वो सरकार से बाहर रहा है, लेकिन यहाँ पर अशांति करने के लिए, जैसा पहला SDF सरकार के समय में क्या होता
था। पोस्ट पोल वायलेंस कितना होता था, जो आप 94 में देखो, 99 में देखो, कितना क्या यहाँ सिक्किम छोड़ के जाना पड़ा कितने लोग को। ऐसा ही वो काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे वो लोग ऐसे झूठा काम करेंगे और ऐसा दूसरे को ब्लेम लगाएंगे। लेकिन सबको मालूम है ये काम कौन कर रहा है, ये जो भी घटना हो रहा है वो कौन पार्टी कर रहा है, सबको मालूम है ना। लो हम सरकार के तरफ से जो भी काम करें हम करेंगे। All right, viewers, there you have heard the Sikkim Chief Minister and top leader of the Sikkim Krantikari Morcha, Mr. Prem Singh Tamang, openly and directly blaming the opposition SDF of creating unrest in the state. They said that they accused the SDF of having created this sort of a trouble during the last 25 years of its rule, and they say, and he has alleged that even today, despite being out of power, Prem Singh Tamang, the Chief Minister, has accused the SDF of indulging in the culture of violence. Let me go straight to Mr. J.B. Darnal. J.B. Darnal ji is the spokesman. J.B. Darnal is the spokesman of the Sikkim Democratic Front. J.B. Darnal ji, आप सुना मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी ने अभी डायरेक्टली कहा कि SDF is responsible for the culture of violence that is prevailing in Sikkim. आप क्या कहेंगे? नहीं, मतलब मुझे कहना ये है, चीफ मिनिस्टर जी का वो वक्तव्य मैंने सुना, तो मैं चीफ मिनिस्टर जी को ही बताना चाहता हूँ कि बाई इलेक्शन में उनने एक मीटिंग में खुलेआम बोला कि पत्थर मारने का कोई मतलब रोक टोक नहीं है, पत्थर मार सकते हैं, ऐसा बोल के चीफ मिनिस्टर साहब ने लोगों को गलत दिशा पर उकसाया था, लोगों को चांदी के ऊपर पत्थर मारने के लिए उकसाया था। तो आप भी बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, वो तो चीफ मिनिस्टर होते होते स्टेट का होम मिनिस्टर भी है, तो होम मिनिस्टर होने के नाते भी आज तक अभी तक मतलब 3 साल में चामलिंग साहब के ऊपर दर्जन 8 दर्जन चामलिंग साहब के ऊपर अटैक हुए हैं। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता को कूट पीट करके मतलब ये हॉस्पिटल में बिठाया है। अभी वो जिस असेंबली का जो सेशन चल रहा था उसमें थाना के सामने, सदर थाना के आगे हमारे 2 लीडर को, युवा नेता को थाना के सामने मार मार के उनको अभी तक हॉस्पिटलाइज करे, 1 महीना तक वो अभी हॉस्पिटल में वो लोग। तो मतलब चामलिंग साहब के ऊपर हमले हुए, उसके ऊपर हमले हुए, खुद के ऊपर हमले हुए, 3 साल में इतना हमला हुआ है विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। ये तो बोलते हैं कि मतलब ये जेबी डर्नाल जी आप कह रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खुद इंसाइट किया है। आप ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। आप एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के आप स्पोक्समैन हैं, आप एलिगेशन लगाया है। आप क्या पुलिस में रिपोर्ट फाइल किया था क्या? पुलिस ने रिपोर्ट क्यों फाइल नहीं किया था? मेरा केस 2020 का केस, 12 जून 2020 का केस है। अभी तक पुलिस ने एक किसी बंदे को पूछा भी नहीं। पकड़ने की बात तो दूर की बात छोड़ दो, मेरे केस के ऊपर पूछा भी नहीं है। मेरा केस ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेरा केस चल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आज तक उसका कोई नतीजा नहीं आया। Okay, आपका पास दोबारा आऊंगा। Let me go now straight. Let us have 3 people on the screen. Let us go to Mr. Jacob Khaling. Mr. Jacob Khaling is a leader of the Sikkim Krantikari Morcha, that is the ruling party, and is also the political secretary to the chief minister, a young political leader from Sikkim. Mr. Jacob Khaling, welcome to Northeast Tonight. You have heard the chief minister directly blaming the SDF for creating political unrest in the state, for continuing with what he said, the culture of violence in the state. That is the allegation leveled by the chief minister. Now, Mr. Khaling, you have also heard the most vocal spokesperson of the SDF, Mr. J.B. Darnal. He is saying that the chief minister has directly provoked the people, incited the people, and that the police case has been filed but no action has been taken. What would you like to say? How would you like to begin? Mr. Khaling, can you hear me? Mr. Khaling,
Okay, Mr. Khaling, we will fix the audio with that. Let me bring Mr. Pasang Sherpa of the Sikkim Nagarik Samaj. Sikkim Nagarik Samaj, it's a civil society organization. Mr. Pasang Sherpa, how do you see the situation in Sikkim? Because Sikkim has been, the people of Sikkim are peace loving. They want the state to prosper. They want peace. The basic requirement for the state to develop is peace. But in the last couple of months, we have been seeing a lot of political unrest. So as somebody representing the civil society, what would you like to say? Wasbir, well, it is unfortunate that the Sikkim, which was previously known as a peaceful state in India, today we are sitting here with you and we are discussing the political unrest that's happening in the state of Sikkim. It is most unfortunate, and I would like to begin by calling both the opposition and position, both the ruling and the opposition party, failing the people of Sikkim. There are lots of apprehension in the minds of people because of the continuous development of this political unrest or violence that's happening across the state. And after the formation of Sikkim Krantikari Morcha, the pace has gone fast, and like it's happening every second day in the state of Sikkim. And the police administration, which we are talking about, I was just listening to our chief minister speaking to media houses in Guwahati, but it is unfortunate that he is lying to the entire Northeast people or entire nation, because on several occasions, on several political statements, even in the government function, he have time and again said that law cannot be broken, but law can be bent. Okay, so such kind of statement has given a negative signal to his party supporter, and even the police administration is completely working on behest of Sikkim Krantikari Morcha, which is the ruling front. All right, And that is Pasang Sherpa, that's a very sharp allegation. Let me once again try to go to Mr. Jacob Khaling, SKM leader and political secretary to Chief Minister. Mr. Jacob Khaling, the Chief Minister said in the morning to our channel that SDF is responsible for the violence, that the SDF is continuing with the culture of violence. Now, you have seen two panelists, Mr. J.B. Darnal, spokesman, saying that Chief Minister is inciting the violence, and you have also heard Pasang Sherpa saying that the police does not act. So these are serious allegations. How would you like to begin, Mr. Jacob Khaling? जो पैनल में ये दो लोग ने सिक्किम गवर्नमेंट के ऊपर अभी एलिगेशन लगाया वायलेंस करने का, ये उन लोगों का कोई नया एलिगेशन नहीं है। अगर सिक्किम में और सिक्किम के सब जनता जानते हैं, जो अति आदरणीय दो मित्र है, वो दो मित्रों का काम ही गवर्नमेंट को एलिगेशन लगाना है। ये कोई बात नहीं है, उनके ये एलिगेशन में कोई भी ट्रुथ अथवा कोई भी सत्यता नहीं है। जो एसटीएफ का स्पोक पर्सन श्री जेबी दर्नल जी अभी पैनल में है, वो वही आदमी है जिसने 2014 के आगे 2011 में एसडीएफ सरकार और पवन चामलिंग जी को वायलेंस के लिए एलिगेशन लगाता आता था। हमारे पास सोशल मीडिया में, प्रेस में ये सब रिकॉर्ड है। इसलिए उन लोगों का ये एक हिपोक्रेसी है कि जो खुद वो करता है वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। हमने 27 मई 2019 को नया सरकार बनाया श्री पीएस गोले जी के नेतृत्व में। उसी समय से हमने पोस्ट इलेक्शन वायलेंस को रोक के अभी तक राज्य में शांति कायम करने के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और नो जीरो एनिमी पॉलिसी के साथ हम सिक्किम के जनता के काम कर रहे हैं। Now, खालिंग जी, ये देखिए, अब पसांग शेरपा साहब ने अभी बताया कि पुलिस में जब कंप्लेंट दिया जाता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता है। ये इसका ऊपर आप क्या कहेंगे?
ने मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मैं पासंग शेरपा जी का कोई भी क्वेश्चन का उत्तर दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उस वर्ग में नहीं पढ़ता हूँ और इतना नीच राजनीति मैंने कभी किया भी नहीं है और भविष्य में नहीं करूँगा कि पॉलिटिकल गेन के लिए किसी को चरित्र हरण करूँ। वो लोग राजनीतिक फायदे के लिए किसी के व्यक्तिगत चरित्र हनन, परिवार को भी बर्बाद करने के राजनीति करते हैं। ठीक है, भविष्य ठीक है। पसांग शेरपा अब कुछ कहना चाहता है। यू वांट टू से समथिंग? यस पसांग। Yeah, see, we are talking about the unrest, political unrest in the state of Sikkim. Is bringing out some other topic, and one more thing is, it is their government. This is Jacob Khaling should answer that it is their government. The administration is under their control. So why police is not taking action? The recent press conference of police department, okay, was such a rubbish press conference where the person who got beaten up is now put in the lockup, and the people who created that unrest are roaming freely. And it is very unfortunate that this government, the Sikkim Krantikari Morcha government, they are in the government, and yesterday there was a Pratibad rally, counter rally. Okay, so this kind of I only would like to request the people like Jacob Khaling, or rather than making unfalsifiable comments in media, they should take up responsibility as a responsible government. If they cannot give governance to the people, they should let the chair and let the people of the state take the charge. Okay. Pasang, just hold your thoughts. I will give an opportunity to Mr. Jacob Khaling to respond, but little later. Let me go to Mr. Naveen Kiran. Mr. Naveen Kiran is a well-known advocate. Mr. Naveen Kiran, as someone from the legal profession, what will be your opening remarks as somebody who lives in Sikkim? How do you see the situation? Because, the common people are always caught in the crossfire. When two major political parties are clashing, common people gets worried. Day-to-day life gets disrupted. What will be your opening remarks? Yeah, at the outset, I would like to state that Sikkim used to be a very peaceful state, but the situation right now is changing. I was quite surprised to see hear the statement of the Honorable Chief Minister, and he stated that earlier in the SDF government too, likewise in the year 1999 and in the year 2004, there was a post-poll violence in the year 1999 and 2004. In those days, I would like to remind the Chief Minister and also the SKM party that the present Chief Minister used to be number 2 of the SDF party. And we were very small then, children then, and we used to hear that all the post-political violence used to be orchestrated by the present Chief Minister. He shouldn't forget that before 2013, the present Chief Minister used to be a legislator of the SDF. Now coming to the present situation, Sikkim is in chaos, but our Chief Minister is in tour of the other northeastern states. His party was elected to give a good parivartan, rather a good governance in Sikkim. But what we have seen, what the ordinary people are saying is, this is not the parivartan what we are wanting. Regarding the present violence of Soaring and others, we are seeing a new trend. That is the mob mentality and mob terrorism. Look, in present situation, the primary opposition party, that is the SDF, they are not in position to create any violence or make any disturbance in Sikkim.
But Kiranji, I'll come back to you. But since you are saying that the SDF is in the opposition and therefore they are not capable of creating any trouble, They are not in position. They are not in position. so that is what you are saying. But you don't need to be in any position to create trouble. I'm not making a comment on the SDF. Look, for example, I'm making a general comment. Anybody can create trouble. Even a single person can create trouble. That's Yes, not yes, the point. yes. Yes, Yeah. yes, yes. But Yes, but yes, let me ask a direct question to Mr. JB Darnal. Mr. JB Darnal, before this show, I was going through media reports. It says that in the Tsorang incident a couple of days ago, an SDF leader had opened fire from a weapon that he was carrying, and that the Sikkim police is looking for this particular person, and this particular person is absconding. Is this true? नहीं, सोरेंग कांड में मतलब एक बंदे ने मतलब फायरिंग किया है, ये हम लोग डिनाई नहीं किए। तो अभी ये एसकेएम गवर्नमेंट के 3 साल की अवधि में 3 साल की टेन्योर में ये हुए है कि अभी सिर्फ अविनाश याखा ही नहीं, अब सिक्किम में हर एक लोग अपने घर में जो फाड़वा हो, जो हल हो, कोदाल हो, कुछ भी लेके चलते हैं। क्योंकि आज के तारीख में इस 3 साल में सिक्किम के लोगों में कितना ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, पॉलिटिकल टेररिज्म हुआ है। लोगों को लोग धमकाते हैं, तरसाते हैं, थाना कोई सुरक्षित नहीं जगह नहीं है। तो इसीलिए लोगों में अब ये भय हो गया है कि अविनाश यात्रा ही क्या। दर्नाल जी, मैं वापस मेरा प्रश्न पे आता हूं। क्या आप ये मानते हैं कि सोरेंग इंसिडेंट में जो व्यक्ति ने गोली मारा था वो क्या आपके सदस्य है, आपके दल के पार्ट मेंबर है? जब मेरे दल के मेंबर है, उसमें जुलाई क्यों करूं मैं? तो आपके सिक्किम में ये सिर्फ अविनाश यात्रा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या? मैं ये प्रश्न करता हूं, दैट मीन्स आपका जो दल का मेंबर है ये क्या वो आर्म्स एमुनेशन लेके घूमते हैं क्या? अरे आर्म्स एमुनेशन छोड़ो ना, 3 बजे के पूरा डे लाइट में 3 बजे में बाईपास रोड पे बीजी रोड में मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। कुछ किया पुलिस ने, कुछ किया सरकार ने, कोई जिम्मेवारी लिया? तो क्या लोगों को सबसे पहले तो लोगों की जान प्यारी है, उसके बाद में कानून। जिंदा ही नहीं रहा तो बचेगा क्या? उसमें पुलिस ये उसको लाइसेंस धारी गन है, उसका लाइसेंस है। तो उसमें डीआईजी रेंज का मैंने स्टेटमेंट सुना कि डीआईजी रेंज बोला कि ये ओवर रिएक्ट हुआ है। क्या आपने मरने के बाद अगर दोस्तों आपने एक बंदे के ऊपर हमला करते हैं, उसके पास लाइसेंस धारी गन है, तो वो क्या निकाल के नहीं फायरिंग नहीं करेगा? आप क्या करते? दूसरा आदमी अगर आपको घेर लिया तो उसके गाड़ी को पूरा पतला चूर कर दिया पत्थर मार के। उसी हमले में हमारा एक दूसरा नेता अरुण लिंबू को इतना गंभीर रूप से घायल हुआ है, वो अभी तक थाना जेल में। तो आप क्या करते हैं सर जी? ओके, जैकब खालिंग जी, आप क्या कहेंगे? दर्नाल जी कह रहे हैं, एसडीएफ की दर्नाल जी कह रहे हैं कि आपको अगर किसी ने अटैक किया ब्रॉड डेड लाइट में, आप तो डिफेंड करना पड़ेगा आप खुद को। लेकिन दर्नाल जी ये भी मानते हैं कि वो व्यक्ति जो गोली मारा था सोरेंग में, वो उनका दल के आदमी है। देखिए, सब जानते हैं सिक्किम एक शांतप्रिय राज्य है। इस राज्य में इस तरह किसी भी आदमी को हथियार बोक के पब्लिक मीटिंग में जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये जस्टिफाई होने वाला बात नहीं है। एक बस्ती में मीटिंग हो रहा था एसटीएफ का, उन लोगों का कहना है। हमारा साधारण सा प्रश्न है कि कोई आदमी बंदूक घर से बोक के किस मानसिकता, किस मेंटेलिटी से इस मीटिंग में जा रहा था, और लोडेड गन, क्योंकि वो अपने बैग से निकलते ही उसने फायरिंग किया। अगर वो वीडियो में, जिस वीडियो का बात हो रहा है, अगर वो वीडियो में आप देखेंगे तो इसके ऊपर तो किसी ने आक्रमण नहीं किया है। अगर आक्रमण किया होता तो वो सड़क में होते थे, उसके ऊपर कुछ हथियार होते थे। वो सिर्फ जनता को डराने के लिए बंदूक फायरिंग करते हुए गया है। अगर उसके पास उसको किसी ने आक्रमण किया, वो सेल्फ डिफेंस में बंदूक उसने फायरिंग किया, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं आते?
आए पुलिस के पास और अपना स्टेटमेंट दे, खुद भी एफआईआर दर्ज करे कि मेरे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, किसी को भी है सेल्फ डिफेंस। अगर उसने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया है तो वो पुलिस से क्यों भाग रहा है? पुलिस में आके वो अपना बयान दर्ज करे, अपने आप को जस्टिफाई करे, न्याय तो मिलेगा, प्रजातंत्र में न्याय तो मिलेगा ही। और जो भी प्रजातंत्र में न्याय मिलेगा, ये जैकब खालिंग जी कह रहे हैं प्रजातंत्र में न्याय मिलेगा। SKM नेता, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम कह रहे हैं। नाउ लेट मी वंस अगेन, आई विल कम बैक टू यू मिस्टर जैकब खालिंग। दोबारा मैं जाता हूं मिस्टर पसांग शेरपा। पसांग शेरपा, आप डोंट यू गेट समटाइम्स वरीड कि सिक्किम जो है एक फ्रंटियर स्टेट है, इट इज अ फ्रंटियर स्टेट, देयरफॉर ए पीसफुल एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। क्या इसमें सिविल सोसाइटी का भी तो दायित्व है टू काम टेम्पर्स? सिविल सोसाइटी का क्या कोई दायित्व नहीं है? डू यू थिंक दैट द सिविल सोसाइटी विल वॉच टू पॉलिटिकल पार्टीज फाइट? सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहे हैं? No, see, we have time and again approached the various agencies. We have approached the government of India also, and we have, raised our concern. As you said, that Sikkim is a politically border-sensitive area, and the peace is must for our progress, and not just the progress of Sikkim, but for the national security as well. Yes. You have rightly pointed out. Absolutely. And as far as civil societies are concerned, we have time and again requesting both the political parties. See, I would like to tell you is both of these SDF and SKM are from the same school of thoughts. The SDF also, they had their hand, blooded their hand during their 25 years of regime in the state of Sikkim. And now the SKM people, the people who were in SDF, now they have become SKM. Now they have, magnified this. They are going in, raising it in numbers, and it's happening every month, every week. Our primary concern is we have written to the Home Ministry, Government of India also, and we have time and again approached the police department in the state also. But the problem here is that the police administration is failing to, discharge their duty to protect the people of Sikkim. The two political parties, rival political parties, their supporter will always have some kind of anonymity or some kind of rivalry among them. No denying about that. And as far as the Soren incident was concerned, the SDF political meeting which was happening in that area was already been informed to the police. It was the police department who gave permission for the loudspeaker. Now it is surprising. No, why that is true. Not a single police person was there at the site. Why no police were deployed? No, I'll have to somewhere what. Yeah. I know, absolutely. I'll before I go for a quick break, Mr. Naveen Kiran, what do you think is the road ahead? How to diffuse the tension between the two major political parties? Because, as I'm saying, every non-political person is a member of the civil society. You are also a member of you may be a lawyer, but you are also a member of the civil society. Now, my question to Mr. Pasang Sherpa was, don't you think that the civil society is also responsible, particularly in a state like Sikkim, which is a frontier state, therefore peace is of utmost importance? Yes. Yeah, I have been. Civil society is equally accountable for maintainability of peace and tranquility in the state. Yes. And I have been advocating. I have been advocating peace in the state of Sikkim, but seems the present political dispensation is not learning their lesson. I am coming back to the swearing incident. There is a video of Mr. Avinash Yakha firing in the air. If we closely look at that video, their vehicle is attacked by stone. And also I see
that Avinash Yaka was attacked by stone. And in that particular scuffle, he was firing in the air and he ran for his life. That is the situation. And coming back to the gun thing, if he has a license to carry a gun, he can carry a gun, like he can hide and he can carry a gun. Now, before I go for the break, Mr. Jacob Khaling, you must be privy to at least a preliminary investigation. Now, where is this person? Was he attacked with stones, as Mr. Naveen Kiran is saying, or for that matter, some other people in the SDF were saying? Did this gentleman carry a licensed weapon? What information do you have? देखिए, प्रजातंत्र में बोलने के लिए सबको छूट है और विपक्ष में बैठे हुए लोग सरकार को जो भी एलिगेशन लगा सकते हैं। ये हम भारत के विभिन्न राज्य में भी देख रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल में भी देख रहे हैं। पर बात वहां जाके खत्म होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका रिजल्ट क्या है और पब्लिक ने देखा क्या है, सच में है क्या, जाके पॉइंट यहाँ पर अंत होगा। सब सिक्किम में जो दंगा फसाद बोलो, जो अशांति बोलो, जो भी बोलो, सब शुरू किसने किया है उसको पूरा डिटेल्स में देखना चाहिए। प्रेस को भी देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। इस 2 महीने आगे साउथ सिक्किम, अभी नामची डिस्ट्रिक्ट के मल्ली में एक कांड हुआ। वहां पर हमारा एसकेएम पार्टी का कार्यकर्ता, 2-4 कार्यकर्ता मिलके गांव में पार्टी का कैलेंडर बांट रहा था और उसी टाइम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन एसडीएफ का पार्टी का प्रेसिडेंट श्री पवन चामलिंग जी का काफिला गया और हमारे आदमी के ऊपर पत्थर मारा। सिर्फ हमारा आदमी के ऊपर ही नहीं पत्थर मारा, वहां पर जो घूमने के लिए छोटा सा एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर जो भी व्हीकल्स आया था टूरिस्ट का, उसको भी तोड़फोड़ किया। पुलिस ने भी इसमें भी उन लोगों का आदमी को अरेस्ट किया। उससे 1-2 दिन बाद में, ये 2 महीने आगे का बात है, जोरथांग में हमारा पार्टी का जोन सुब्बा नाम का एक यूथ कन्वेनर है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का, रात में जाके उसका उसका गाड़ी को पार्किंग किया जगह पर जला दिया। और मार्च और ये अप्रैल का फर्स्ट वीक में देखेंगे तो जो हमारा सिक्किम का एनुअल बजट पेश हुआ था, उस एनुअल बजट में दावी तो ये किया गया कि एसकेएम का लड़कों ने, एसकेएम का समर्थक ने एसडीएफ का काफिला का गाड़ी को तोड़फोड़ किया, दावी ये किया गया। और पुलिस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस ने भी चारों जगह घेराबंदी करके ऐसा कांड फिर न हो और इसमें इन्वॉल्व कौन है उसको पकड़ने के लिए अभियान चलाया। एक होटल से एसडीएफ पार्टी से हायर किया हुआ 7 यूथ जो स्टेट का नहीं था, स्टेट से बाहर का था, वो पकड़ लिया। नहीं, ये मुझे बताना जरूरी है। वो 7 आदमी को पकड़ लिया और वो हथियार के साथ पकड़ लिया और उसने, जिस आदमी ने उन लोगों को लिए होटल में लेके रखा, होटल बुक किया, वो सब एसडीएफ पार्टी का लीडर्स था। एसडीएफ पार्टी का लीडर्स ने असेंबली से जहां पर 144 लगा हुआ था, वहां पर 7 लड़कों को हायर करके रखा हथियार के साथ, सब एसडीएफ के लोगों ने। देखिए, और जो अविनाश याखा का जी अभी बंदूक का बात आ रहा है, लाइसेंस गन जो भी कैरी कर सकता है, ये कानून का बात है, हम कौन है उसको रोकने के लिए। पर अगर अविनाश याखा जी ने लाइसेंस गन से फायर किया है तो वो गन के साथ वो पुलिस में आए, पुलिस में सरेंडर करे। Okay, that is a valid point. That is a valid point, Jacob Khaling. Quickly, I have to go for a break, but after coming back from the break, I'll go to JB Darnal for comments on this story. And we'll also discuss a little bit about the big multi-commodity exchange scam that has hogged the limelight and has put Sikkim in the spotlight. Don't go away, I'll be right back.
welcome back. The other major issue that is keeping Sikkim on the spotlight is the multi-commodity exchange scam. It's supposed to be a multi-billion-dollar scam. And recently, the police have arrested 3 Siliguri-based businessmen, the Agarwals. 3 Siliguri-based businessmen have been arrested on charges of having been involved in this huge scam. And people are worried because people feel that this scam has tarnished the image of the state. Now, Chief Minister Prem Singh Tamang has urged an enforcement directorate probe into the scam, while the BJP in the state has demanded a CBI inquiry and has also lodged an FIR. Let me go to my panelists on this. Let me first go, before taking comments from the opposition from Mr. Darnal, very quickly, let me go to Mr. Jacob Kaling. Jacob Kaling, what is the status of the investigation into this multi-commodity scam? Your Chief Minister has demanded an ED probe, whereas the BJP in the state has demanded a CBI inquiry and has also lodged an FIR. तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा अभी क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशंस का? एज पर सोर्स ईडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ चुका है. हमारा चीफ मिनिस्टर श्री PS तामाङ जी ने आगे ही पब्लिक की मीटिंग में जनता को बता चुका है और ऑफिशियली ये काम भी कर चुका है कि इसमें अगर जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा. अगर स्टेट का मैटर है और स्टेट भी कहीं कानूनी स्टेप लेना है तो स्टेट लेगा. इसमें हम थोड़ा भी किसी को माफी नहीं करेंगे. पर ये ईडी सेंट्रल सब्जेक्ट है और जो भी ये इश्यू है एक सेंट्रल सब्जेक्ट होने के कारण सेंटर का एजेंसी इस पर काम कर रहा है. इसमें एक्चुअली टेक्निकली इसमें आरोप लगाने वाला जो भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका हम जवाब देंगे, जनता में भी देंगे, कानून के दरवाजे पे देंगे, वो उसमें पीछे नहीं हटेंगे. अगर इसमें टेक्निकली और कानून का बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से ये कोई लेना देना नहीं है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है. पर स्टेट गवर्नमेंट भी एक रेस्पॉन्सिबल है सिक्किम के इमेज बचाने का और सिक्किम के जनता के हित में काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट फुल रेस्पॉन्सिबल लेगा, नहीं भागेगा. कानून के दायरे में लेके जो भी कानून कार्रवाई करना है स्टेट गवर्नमेंट करेगा. ये हमारा चीफ मिनिस्टर ने आगे ही ये स्टेटमेंट दे चुका है. JB डर्नाल साहब, आप क्या कहेंगे? लोग जो है आम जनता जो है उनका बहुत चिंतित है क्योंकि सिक्किम का इमेज का बारे में ये दिस अ हाई लेवल ऑफ करप्शन, तो इसलिए लोग बहुत चिंता में हैं. Okay, I think we lost that line to JB Darnal. We'll reconnect with him. I am passing on the same question to Mr. Naveen Kiran, advocate. Mr. Naveen Kiran ji, आप क्या कहेंगे? Because this, yes, खालिंग जी ने, जैकब खालिंग जी ने सही बताया है कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट का इमेज का सवाल है. तो आप क्या कहेंगे? लोग चिंता में हैं. Yes, on this he is very right. This multi-commodity exchange thing is hitting the public of Sikkim very hard. There was a report on last month. There was a report that about 45,000 crores was invested in this multi-commodity exchange from Sikkim. And what is the worrying part, and what is worrying to the people of Sikkim is that the Sikkim residents, those who have Sikkim subject or COI, descendant of Sikkim subject, they are exempted from paying income tax under section 1026 AAA of the Income Tax Act of 1961. And because of this issue, the income tax issue might get, it might get disturbed. That is the main concern. And I was also very amazed to see that our GSDP, our latest GSDP, I'm talking about financial year, fiscal year 2000 to 2021. Our GSDP is almost 26,000 crores.
but 26,000 crores of for 1 year, but investment of 45,000 crore in a month of February alone, that is a very, very alarming thing. And regarding the arrest and ED investigation, we are again confused. The arrest of Siliguri businessman or ED initiating the probe, that is unverified report. Those are all unverified report. Today I was just going through one this thing news from Talk Sikkim. I'm stating from that particular source, Talk Sikkim. Mr. Ajay Lohar, who is the Deputy Director of ED Sikkim, has clarified that reports of Chief Minister P.S. Tamang handing over $1 billion MCX probe of ED is incorrect, and no such move has been initiated by ED. So this is the stage. We are very confused. Okay. Whether the ED is initiating, whether there has been, these are all unverified reports. Right. So we are unaware. Right. Right. So that's a very interesting point. I'll be soon. मैं दोबारा जाऊंगा Mr. J.B. Dhanal, SDF spokesman के पास. Mr. Naveen Kiran has said a very interesting point कि gross state domestic product last year was 26,000 crore, लेकिन investment सिर्फ एक ही महीना में 45,000 crore. We don't know the authenticity of this figure of 45,000 crore, but ये अगर सही है, ये अगर सही होता है, निकालता है, तो it's a hugely surprising development. We don't know anything about it now. But I'm coming to you, Mr. Pasang Sherpa, in 2 minutes. But let me quickly go to Mr. J.B. Dhanal. J.B. Dhanal ji, ये जो multi commodity exchange scam है, ये multi-billion dollar scam है, क्या ये एक रातों रात हो सकता है? क्या ये इतना जल्दी ये हो सकता है? इसका जो डेवलप हो रहा था ये स्कैम, आपको कोई पता नहीं था पहले? आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा स्कैम कोई माई बाप के बगैर और कोई बड़ा आदमी के आशीर्वाद के बगैर ये होता ही नहीं है। और उसमें भी ये सिक्किम जैसे छोटे स्टेट जहाँ ये अभी तो इतना तो बात ये है कि अभी मतलब सिक्किम में लोगों में अभी भी मतलब ये कोई नेशनल पार्टी का सरकार नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि सिक्किम के लोगों में अभी मेन स्ट्रीम में हम मेंटली नहीं गए हैं। तो ऐसे स्टेट में रहने वाले, दूर दराज की स्टेट में रहने वाले स्टेट से कहाँ से मतलब 200 आदमी से एक बार मतलब 2000 ऊपर वाले आदमी MCX में बिजनेस करता है। तो इतना बड़ा स्कैम और सरकार के, प्रशासन के और ये मतलब ये डिपार्टमेंट के जानकारी के बगैर हो ही नहीं सकता है। ये पहली बात तो। और उस स्कैम में भी चीफ मिनिस्टर का रवैया मतलब ढुलमुल रवैया है। उसमें क्या ढुलमुल रवैया क्या है? वो जब MCS स्कैम की बात आई तो सीएम साहब ने बोला, सीएम साहब ने बोला है कि हमने ये केस विजिलेंस को दिया है। तो फिर दूसरे ही पल में बोलते हैं कि ये स्टेट वाले केस नहीं है, ये तो सेंट्रल वाले केस है, ये ईडी वाला केस है, सीबीआई वाला केस है बोलते हैं। तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है ना। ये आप नहीं मानते ये स्टेट का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, स्टेट का सब्जेक्ट मैं मानो या ना मानो, मेरे से ज्यादा तो सीएम साहब को जानना चाहिए ना, उनको मानना चाहिए ना, जो सरकार में बैठे हुए हैं। स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है? जैकब खालिंग जी, ये जो सिलीगुड़ी बेस्ड 3 बिजनेसमैन को अरेस्ट किया बोल के जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है, ये क्या कंफर्म्ड है कि नहीं है? नहीं, इसमें अभी नवीन जी ने जो कहा मेरे सोर्स से भी वही सच है कि ये वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है। पर ये बात सच है कि ईडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। किसी भी वक्त किसी भी छोटा मछली हो या बड़ा मछली हो, कोई भी, और एक नहीं बहुत सारे पकड़ में आएंगे, ये बात जरूर है। तो और मैं ये बात पूछ रहा था डर्नाल जी से कि इतना बड़ा multi-billion dollar स्कैम क्या या ओवरनाइट हो सकता है? क्या यह पहले से हो रहा था, किसी को पता नहीं था? ये आप क्या समझते हैं जैकब जी? जी, अब इसमें किसी भी कमेंट ठोस देना अभी प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि ये एक
वास्ट इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और इसमें जो जेबी दलाल जी अभी कभी ईडी बोल के एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, बस उसमें मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि जब पहले सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट से ये जनता में प्रकाश आया, तभी हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने के नाते हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का स्टेट का सबसे बड़ा एजेंसी है विजिलेंस। ये जैसे ही एक न्यूज़पेपर में आया, हमने इसको स्टेट को विजिलेंस को अलर्ट करके जांच करने के लिए सेम चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, जो चीफ मिनिस्टर के दायरे में है। इससे बड़ा जांच एजेंसी हमारे दायरे में नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने विजिलेंस को इसलिए दिया, अगर इसमें विजिलेंस कुछ कर सके, विजिलेंस के दायरे में कुछ आए तो इमीडिएट एक्शन हो। विजिलेंस के दायरे में आएगा तो होगा, अगर विजिलेंस के दायरे में नहीं है तो ईडी कर रहा है। और जो सीबीआई का बात अभी आ रहा है, देश का जांच एजेंसी का स्पेशलिटीज क्या है वो हर पैनलिस्ट को जानना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल क्राइम हो, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, फर्स्ट ईडी इसको इन्वेस्टिगेशन करता है और ईडी इसका एक्सपर्ट है। तो ईडी ये कर रहा है। इसमें सीबीआई और ईडी का जो कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई बात ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हम आज फिर ये पब्लिक में एश्योर करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में भी ये इन्वेस्टिगेशन आता है तो स्टेट गवर्नमेंट सिंसियरली ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन करेगा। और वो अगर राज्य में कोई दोषी हो तो उसको भी पकड़ेगा, और राज्य से बाहर किसी है तो वहां जाके भी पकड़ लेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी को कोई भी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट हर सहयोग एक्सटेंड करेगा। All right, that's an assurance from the government spokesman and political secretary to the CM, Jacob Kaling. Let me go to you, Mr. Pasang Sherpa. Pasang Sherpa, as a member of the civil society, are you a worried man today? आप क्या चिंतित हैं? Because this scam, ये जो scam है, multi-billion-dollar scam, एक छोटा सा state सिक्किम, तो ये सिक्किम का इमेज का बड़ा ही हिट लिया है। इट हैज हैड अ ह्यूज हिट ऑन द इमेज ऑफ सिक्किम। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शॉर्ट से बोलिएगा प्लीज बी शॉर्ट। Yes, we are worried, and we were Sikkim Nagarik Samaj was the first organization to approach Enforcement Directorate, and we submitted a letter. After that, they have initiated the investigation. Number one. Number two, it is big lie on part of the SKM spokesperson, the leader, Mr. Jacob Kaling, that they were not aware about this scam from before. Let me tell you that in the year 2020, a letter from a businessman was, returned to the Finance Department, Government of Sikkim, asking about the clarity on the stamp duty to be paid on the MCX. So a letter has been written to MCX by the Finance Department, Government of Sikkim, saying that Sikkim has its own old law relating to stamp duty, and no stamp duty should be levied to the traders in MCX in Mumbai. The traders from Sikkim should be exempted from that duty. So that means that government were already aware of the MCX scam happening. Using this loophole of a law protected under Article 371 Act, traders from outside and the traders from the state of Sikkim, wealthy traders, misusing the Sikkimese people and making proxy traders from the Sikkim citizens of Sikkim who have CO and Sikkim subject certificate. This scam has happened. So today, denying the fact and putting the blame or putting the responsibility to the center will not help. Okay. I think this is a multi-billion-dollar scam. And the people, the ordinary armed army also have a responsibility. They should not allow their status to be misused
by corrupt businessmen, by corrupt people who wants to take advantage of the fact that the people of Sikkim subjects and others do not have to pay tax. So that is a very big issue. I have run out of time, and today we have discussed the several issues concerning Sikkim for the first time on Northeast Tonight. I really enjoyed talking to all the four esteemed panelists on the show, Mr. Jacob Kaling, Mr. J.B. Darnal, Mr. Pasang Sherpa, Mr. Naveen Kiran, and I had a fantastic comments and feedback from the viewers, because we were live stream on Facebook and we were also live stream on YouTube, besides of course being live on our channel. So the beautiful state of Sikkim, at the end I would only say that we all want Sikkim to be peaceful, the Sikkim to progress and develop and become one of the finest states in the country, for which we will need support of the entire people of Sikkim, cutting across party lines. On that note, I once again thank my panelists for participating in the program and the viewers of Sikkim for watching the show. Good night and goodbye.